welcome to Credence Digital Learning. I am your English teacher Astha Jain and we are discussing class 11th English syllabus. Today we are going to start with a new poem that is titled as Father to Son by Elizabeth Jennings. Talking about the justification of title and the theme, the title is self-explanatory. फादर टू सन, एक पिता जो अपने बेटे से कुछ कहना चाहता है या बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता है. इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ जनरेशन गैप विच रेजेस इट्स हेड ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड चेंज ऑफ व्यूज एंड आइडियाज. हम सभी जब बहुत छोटे बच्चे थे तो जैसे ही हमारे पेरेंट्स घर आते थे, स्पेशली पापा, तो शाम को हम दौड़ के उनके पास जाया करते थे, हम उनसे बात किया करते थे. वी यूज्ड टू डिमांड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, especially for boys, a distance comes in the relationship of a father and a son. I hope you'll agree with me in this. धीरे धीरे जनरेशन गैप के कारण, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के कारण पिता और बेटे के बीच में बातचीत ही कम हो जाती है. वो एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं करते because they don't have any topics to discuss in common. And poor father is feeling helpless because he wants to renew the relationship. लेकिन उसे नहीं पता कि इस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए. उसे नहीं पता कि ये बेटा तो मेरा ही है, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं. So that is what is being described in the poem, a beautiful poem and conveying a universal phenomena that happens in majority of the cases. So let us understand the poem line by line. Talking about the first stanza, I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. तो एक पिता अपनी व्यथा बता रहे हैं कि मुझे ये बच्चा समझ में ही नहीं आता, जबकि हम दोनों एक ही घर में सालों से रह रहे हैं. I know nothing of him. मुझे ऐसा लगता है मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ. So try to build up a new relationship from how he was when small. तो मैं एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा रिश्ता हुआ करता था जब वो छोटा था. तो the father, poor father is helpless and he wants to renew the relationship. He is unable to understand what has exactly happened. लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो रिश्ता उनका उनके बच्चे के साथ तब था जब वो छोटा था, वो ही रिश्ता फिर से आ जाए. That takes us to the second stanza, which is, Yet have I killed the seed I spent or sown it, where the land is his and none of mine. तो क्या मैं जिम्मेदार हूँ इस रिश्ते को मारने के लिए? क्या मैंने ही उस रिश्ते को खत्म कर दिया है जिसका ओरिजिन तो मुझसे ही है? We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. तो हम दोनों एक दूसरे से ऐसे बातचीत करते हैं जैसे हम अजनबी हैं. और जब हमारी बातचीत होती है कोई अंडरस्टैंडिंग दिखाई ही नहीं देती. The child is built to my design. वो मेरा बच्चा है, फिजिकली वो मेरे जैसा दिखता है. Yet what he loves I cannot share. मैं समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या चाहता है और उसे क्या पसंद है. That takes us to the third stanza, which is silence surrounds us. जब हम दोनों एक साथ होते हैं, हमारे आसपास केवल चुप्पी होती है. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew. तो प्रोडिजल एक ऐसा बच्चा है जो फूलिशली घर को छोड़ के चला गया है और वो वापस आना चाहता है. तो पिता ये कह रहे हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ जो घर को छोड़ के चला गया है. फिजिकली ही हैज नॉट लेफ्ट द होम, बट मेटाफोरिकली ही इज नॉट लिविंग ओवर देयर. Rather than see him make and move his world. तो मैं नहीं देख सकता कि उसने अपनी खुद की एक दुनिया बसा ली है. मैं नहीं देख सकता कि वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं है. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. तो अगर वो मेरे पास आए तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. मैं भी उसे माफ कर दूंगा और मैं इस दुख से एक नए रिश्ते की शुरुआत करूंगा. The fourth stanza, which reads, Father and son, we must live on the same globe and the same land. He speak, I cannot understand myself why anger grows from grief. तो बेटा कह रहा है मुझे नहीं समझ आता कि दुख से गुस्सा कैसे पैदा हो जाता है. जब भी मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ मैं क्यों इरिटेट हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. I don't know. We each put out an empty hand. हम दोनों अपने खाली हाथों को आगे कर रहे हैं, longing for someone to forgive, ताकि एक दूसरे को माफ कर सके. So actually we can't actually decide who is the culprit. We can neither blame the father nor we can blame the son. ना तो हम पिता को पूरी तरीके से दोषी ठहरा सकते हैं और ना ही बेटे को. Because there is lack of communication, because there are conflicting ideas, because there is generation gap. कहीं कहीं पे शायद पिता की गलती है और कहीं कहीं पे शायद बेटे की गलती है. But overall the relationship is ruined and poor father is feeling helpless because he wants his son back, but he does not actually know how to do it. So that's it with the poem Father to Son, describing a universal phenomena that happens in almost every home. That takes us to the poetic devices of the poem. Talking about the first poetic device that is used in the poem, that is antithesis.
Antithesis का मतलब होता है when two contradictory ideas are put together. So we have antithesis in land is his and none of mine, and also in shaping from sorrow a new love. Apart from that, we have alliteration. We know what is alliteration. Alliteration is the repetition of the consonant or the character. Alliteration is the repetition of alphabet. So we have alliteration in silence surrounds us, S, S and S. We also have alliteration in the home he knew, H and H. The seed I spent or sown, S, S and S. And last but not the least, we have alliteration in shaping from sorrow, S and S. That takes us to the last poetic device from the poem, that is metaphor. We have metaphor in land is his and none of mine. क्योंकि यहाँ पे land जो है represent करती है life को, तो life is his and none of mine. We also have metaphor in we must live on the same globe and the same land. So living on the same globe and the same land means living, sharing, caring about each other, talking to each other, communicating and sharing common lives. So that's it with the poem Father to Son. You will see some practice questions being displayed on the screen. Kindly practice them. We'll be meeting to discuss yet another interesting chapter. Till then, take care. Thank you.